Hello and welcome to all. My name is Sailendra Yadav. Today I am going to discuss about a concept which is based on line and point. Right. So this is our line. Say a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a point, say x1 and y1. Right. We have studied, right, perpendicular distance of a point to the line. So what are the procedure we have studied? Right. Now question is, what is the angular distance, right, of this point? Suppose this one is C, right? Suppose this one is C, say x2, y2, and this one is theta. So one thing notice in this triangle AB, you will find out very easily by using the formula of perpendicularity, right? So let's say this one is R1 and this one is R2 and this one is R3, right? R1, R2 and R3. So R1 is we can say known, R2 which is required, and talking about R thing can't say, right? Maybe known, maybe unknown. So in this triangle A B C, use sine theta R1 upon R2. Once you have theta known, then find out the what R2, because R1 is known and theta is now unknown. If once theta known, then we can find out the R2, right? So here theta is unknown. In case of theta, suppose theta is equal to 45 degree. So what is the R2, and let's say R1 is equal to what? 2. So sine of 45 is equal to 2 upon what? R2. So here R2 is equal to 2 upon sine of 45, and use the value of sine 45 to root 2, right? So here R2 is equal to 2 root 2 is the distance, angular distance of a point. We can see distance between A and C. Now question is, if theta is unknown, right? Question, if you have a point and a line, say x1 y1, and this one is line a1x plus b1y plus c1 equal to 0, right? And what is the distance of this point parallel to the line, right? Say a2x plus b2y plus c2 equal to 0, right? This one is the known line and this one is also known line, right? Perpendicular, angular distance of a point which is A, and we can say distance parallel to the this line. Hence you have find out distance what, let's say this point is B. So this is our task, how to find out distance between A and B. One procedure we have studied this one. Now a concept, we can say, first write down the line parallel to the what, this line, say L2
say L1, right? So by using this line, we can write a equation of a line passing through x1 and y1. So that line will be what? Say L1, a2x plus b2y plus lambda equal to 0. And this line is passing through, this line is passing through what? X1 and y1, right? So here lambda is unknown, so by using x1 y1 we can find out the lambda. Say this value, we can say c. So here a2x plus b2y plus c equal to 0. It is, this line is what? Known line. This one is known line, and a2x plus b2y plus c equal to 0. This is our line, a2x plus b2y plus c equal to 0. This is our what? Known line. From where? From L2, which is a2x plus b2y plus what? C2. Initially this one is the given line, and by using the concept of parallel line we can find out this line. And now this one is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, known line. This one is also known line, and we can find out the point of intersection, say c, right, or b, and this one is a. So what is the intersection of these two lines? Let's say x3 y3, right? So here x1 and y1 what? Known, and x3 and y3 also known. Just use the formula what? Distance formula. And difference of abscissa x3, and difference of what? Coordinate, and taking square root we can find out the distance, right? And this is the distance between a and b. Point a known, point b also known, so we can find out the angular distance, right? Angular distance of a point to the line. मतलब इस प्रोसीजर में सीन ये है, इस प्रोसीजर में पूरा सीन ये है कि आपके पास एक नोन लाइन गिवन रहेगी, पॉइंट जो है एक गिवन रहेगा, वो पॉइंट कौन सा है? लेट्स से x1 एंड y1, राइट? ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा, सर्टेन है, नहीं तो फिर आप एंगुलर डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल या आर पर्टिकुलर लाइन पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, राइट? लेकिन उसके सपोर्ट में इन्होंने क्या किया है कि एक लाइन गिवन दे दी गई है। इन्होंने क्या किया है कि एक गिवन लाइन इसने दिया है, तो इस गिवन लाइन के हेल्प से आपको करना क्या होगा कि एक नई लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी होगी वो, और उस लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा? x1 एंड y1, राइट? तो पैरेलल लाइन को कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। कोई अगर लाइन आपको दी रहेगी
अगर कोई लाइन आपको दी रहती है तो उसके पैरेलल लाइन लिखने का तरीका आपको पता है, क्या आइडिया है, ये पता है। अब ऐसी पर्टिकुलर लाइन बताओ जो एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर लाइन के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन तो मिल गया है, लेकिन पर्टिकुलर लाइन को पाने के लिए पर्टिकुलर कैसे नहीं चाहिए, एक पॉइंट, तो वो पॉइंट भी तो मिल गया ए, इस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से पैरेलल लाइन निकाल लेंगे, वो लाइन से L3, ये क्या है, इनिशियली L1 गिवन है, तो यहाँ से L1 और L3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो पॉइंट बी होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ए भी आपके पास नोन है, बी भी क्या है, नोन है, राइट। सो x3 y3, लास्ट में क्या करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम ए बी जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से ये प्रोसीजर था, और छोटे से छोटे प्रॉब्लम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।